Assalamu alaikum, Khala. Can you hear me? Yes, yes, I can hear you. Walaikum assalam. How are you? I'm fine. I'm great. Finally, we've started this podcast after, 2 days of delay. Yes. So, Oh, yeah. Apologies for the delay, but I mean it's a good time. I guess couldn't be better because of the weather. So yeah, yeah, it's hmm, going to be a good one, I hope. exactly. And apologies from my side as well, because, No, I no, shouldn't have delayed and, so there were some reasons I couldn't just, communicate well. no, So, no. mhm. That's no problem at all. Okay, thank you, Khala. Okay, first, Khala, can you please introduce yourself? Yeah, sure. First of all, thank you so much, Khadija, for all the good work that you are doing, and also for having me on this podcast. So, yeah, I'm a sociology graduate, and at present, I'm teaching sociology at a public sector university. So, basically, my areas of interest are interspecies justice, as you know, climate justice, gender equality. So, yeah, basically. I'm also a literature enthusiast, and I have also been working as an Urdu voiceover artist and translator. So, yeah, that's pretty much about me. That's impressive. And you've also been working with some, NGOs as well. Could you just tell us about it, about Yeah, your yeah. experience? Yeah, definitely. So previously, I worked with this NGO where our primary focus was on women empowerment and women entrepreneurship, and also uh, sorry, Khadija, are you saying something to me? No, no, Um, no, no, Khalid. okay, okay, fine. So yeah, so I worked with I was telling that I worked with this NGO where our area of interest was women empowerment and Mhm. entrepreneurship, and basically we work for the economic uplifting of women of underprivileged areas. And also I'm a salamti fellow, which means that there is this organization in Mhm. Pakistan which goes by the name Peace Without Borders. Mhm. So they have this program where they bring together 30 people annually from across Pakistan, working in various fields of life. And they have this fellowship where we basically it's a Mhm. residential setup where we gather together and Okay. have interactive sessions and research based discussions, and on how we can make our society a better one in terms of peace and harmony and interfaith relationships. We can improve interfaith relationships, which Mhm. very sort of there is hatred and there is um, lack of compassion. So so that's the basically experience that I have had of NGO sector. All right. Okay. So, first thing I would like to ask is why is interspecies justice becoming a topic of utmost concern in these years? Hmm. Oh, wow. So that's a good question. And I think we should start with what exactly interspecies justice is. Yeah, exactly. So for all the audience that is listening to us at the moment, I think it would be a good starting point. So basically, you see that interspecies justice is uh, basically it refers to justice and fairness across different species, and the pursuit of justice and fairness between different species, recognizing that all species have inherent value, and they deserve ethical consideration. And it also emphasizes the need to address the disparities and the harms and injustices often suffered by non-human Mm-hmm. animals at the hands of humans. So this can include issues such as habitat destruction, animal cruelty, exploitation, and environmental degradation. So now I'm coming to the question that you Mm-hmm. actually asked, that why has this
area gained attention recently. So I believe, Khadija, that there could be two or three factors primarily. First one is, the recent wave of awareness regarding our environment and the protection, basically. So we see, Greta Thunberg, who Yeah. actually initiated a whole movement, and also not because of her only, but there has been a lot of number of activists who were actually working for climate justice and for the awareness regarding environment and why it is important for us humans to Mm-hmm. protect the nature. So first of all, I believe that this environmental awareness, which which comes with the increasing recognition of interconnectedness of all species, and the importance of preserving Mm-hmm. the environment, the biodiversity, and and why we are having this environmental crisis, and why do we need to act more responsibly. And then I believe the credit goes to animal rights movements as well. There have been a lot of activists working on the protection of animal rights, and they have been raising their voices regarding you know regarding the significance of Mm-hmm. treating animals more humanely, and they are highlighting the need for the ethical treatment of animals, and also they are challenging basically the traditional notion that humans have superior rights over other species. So I believe that Mm-hmm. this notion, which is actually being challenged, is a great thing that happened over the years, and that's because as a result of this, actually, we are seeing so much attention being paid Mm-hmm. to the idea of this interspecies justice. And also, there are, a scientific Mm-hmm. understanding and research works that have been done by primatologists and anthropologists. I must mention here the name of Dr. Jane Goodall, Mm-hmm. who is an English primatologist and anthropologist, and who has been working with chimpanzees for over 60 years now. And she is the one uh, who actually laid the foundation of this understanding of uh, chimpanzees, and how they have this they have this understanding of they have cognitive abilities, and they can use tools actually. And she's, I mean, she's, I guess, 89 years old now, but she's still actively working for the preservation of habitats of other primates. So I think that's because of these great human beings that basically we see this change now. All right. So, Hala, is it, in any way related to the way we usually treat or think about the indigenous people, like the Native Americans and, those who live in those parts of America? Uh, you Mm-hmm. know, so how do we treat them? And how is the treatment with the indigenous people related to how we treat animals? Like, is it any different, or is it, uh, in any way superior to the way we are treating the animals? Hmm. Actually, I believe, Khadija, the notion that some humans are superior than other human beings or other non-human species is basically the notion that you will find behind every cruelty or injustice. So what happens to indigenous communities? We see that they are not being treated fairly. They are often their lands are often snatched away from them, and they are often treated in a way which is far from justice and fairness. So that's the similar way we treat non-human species, because obviously we think that they Mm-hmm. have they don't have equal rights. um, so I think whenever we talk about the notion of superiority, it is
it is the notion that is the most problematic one, and Yeah. because of this, actually, Hmm. this thing which we fail to recognize, that if human beings are called ashraful makhlukat, as we Yeah. say in Urdu, Hmm. it all actually comes with a lot of responsibility, but Exactly. Yeah. we actually, we assume that this is something that we should be proud of. No, I believe that this is something which is which asks you to be more Hmm. cautious and conscious and careful while treating with other non-human species and other human beings as well. So if you are given this position of authority or superiority, it means that you have a responsibility towards others who are maybe a bit weak, maybe who cannot speak for themselves, Hmm. who don't have a voice, so I think this is a matter of responsibility and not a matter of prestige, actually. Yeah, but the problem is, Hala, not a lot of people think that way. You are Hmm. someone who is like extremely concerned for the animals, for the for those who can't speak for themselves, like the indigenous people. They don't have much power, the authority, the voice to speak because they're vulnerable. They don't have proper rights and such. But I think most people nowadays, especially the elite class and those who have the power, the authority, who are, prominent figures of the society, they don't, really raise their voice. They don't really care about it because they just, but I mean, how can sustainability really benefit them? It's not something that will, um, um, you know, in any way benefit them in case of like it won't profit, it won't add to their profits or stuff, and Hmm. only this will add to their costs, and especially if they're Yeah. businessmen, it's maybe this might add to their image and reputation, but on the other hand their profits might decrease, um and they would have to pay more to be more sustainable, to act in a more ethical way. So that's the reason they don't really care. But why, how can they really help in raising awareness, and how can they really speak for the animals and for the indigenous Hmm. people and those who can't raise Hmm. voice for themselves? Yeah, it's a very good one, and actually a very tricky question. So yes, Khadija, you're very right when you say that why would someone who is a wealthy and rich businessman, why would he care about the environment or the deforestation? Because if he is the one who gets benefits, get benefit by cutting the trees of cutting the palm trees to get the palm Yeah. oil, Mm-hmm. which has huge benefits in when it comes to making edibles and also other products. So uh, exactly, why should he be concerned? But I guess it's more this is the question of our existence, actually. It's not about making money or increasing your wealth or accumulation of wealth for that matter. But you see, Khadija, at the end of the day, we need to understand, we need to realize the fact that after all, we are going to have this planet as our only home. No matter how rich you get, no matter how wealthy you get, uh, where are you supposed to go? I mean, if you make the climate conditions Yeah. unbearable, unfavorable, and if you pollute the seas, the water bodies, the air, um, Hmm. Mm-hmm. how do you think you can get clearer air for you to breathe? So eventually you are going to get affected by whatever the actions you are irresponsibly taking today. So and it's not about us only, it's about the coming generations, and I think it's a huge ethical question, which needs to be bare in our minds whenever we think of expanding ourselves. Now, a lot of people say that, okay, so if the circumstances and conditions on earth um, Mm-hmm. are not livable Yeah. anymore, so rich people are going to move to Mars. Okay, fine. But Hmm. again, the question is, can every single human being afford
to move to Mars, and Mm-hmm. is that even, it's not even I mean, it's not a logical solution, to say the least. Because obviously, the population of Earth is currently 8 billion Yeah. human beings. We are 8 billion in numbers. So बिल्कुल, I and mean, the how do environment you? also it has a carrying capacity. और अगर उससे हम Yeah. exceed कर जाए, I mean this is not a solution कि आप एक चीज खराब करें, pollution फैलाएं, बजाय उसको Yes, ठीक yes, करने के, साफ करने के, you decide कि नहीं अब हम कहीं और चले जाते हैं at a, in a yes. better place, वहां जाके दोबारा हम ये सारा करेंगे और फिर वहां से Hmm. मतलब किसी third planet पे चले जाएं. मगर जिस तरह Hmm. हम कहते हैं there is no planet B, हमें यही रहना है और यही मार्स का Hmm. भी हो सकता है, मगर I think that's a um, फार फेच प्लान और इतना आसानी से Yes, तो हम yes, नहीं it कर is. सकते. Yes, it sure is. So I'll quote Sheikh Sadi from Iran here. उनकी एक वर्स है, वो ये कहते हैं कि it's in Persian obviously. So he says, तो खारे ज़मीरा निकू साख्ती कि बा आसमां नीस परदाख्ती. So it translates into that, क्या तूने जमीन का काम सारा संवार लिया है, जो तो अब आसमान की तरफ परवाज करने का सोच रहा है, या तू अब आसमान की तरफ या परवाज करा जाता है. I mean, this बिल्कुल. is the this is this is your home, and if you cannot take care of this home, I mean, having another home and making it livable and beautiful for humans and other creatures is just a, I mean, as you said, it's a far-fetched idea, and not a practical one in बिल्कुल terms of या. that. So yeah. So at the end of the day, what we need to remember is the interconnectedness of each and every living thing that is on earth, and how we are connected to our, the ecosystem overall. So if you damage one thing, it sure is gonna have a impact on another thing, and so the cycle goes on. Exactly. um yes, and okay, next what I would like to ask Khala is, could you like please impress upon some forms of cruelty towards non-human species and the Hmm. reasons behind them. Reasons, it might be Hmm. a psychological reason for entertainment, or any other reasons. Hmm. Well, Khadija, that's a hard one actually, because obviously, the scale of cruelty that you find Hmm. here is unspeakable. I mean, you cannot find the courage or strength to even talk about it. It's very difficult for me to even talk about it, because being an animal lover, being a pet lover, um, what I see around me is horrendous. So okay, let's start with Laika. The poor dog, which was taken off the streets, Hmm. and was trained in a way so that she could be used for this space mission, and she was put on Soviet spacecraft Sputnik 2 Oh. in 1957. And so yeah, so Mhm. you see what, for our own expansion, and for our own sort of, I mean, quote unquote development, which we will call Mhm. development of human race and all, progress and development. So a poor animal was used, and when she was sent into the space, she due to Mhm. overheating and whatnot, she was just burnt alive actually in that Mhm. spacecraft. So that I just imagine how 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 low humans Mhm. can Yeah. stoop when it comes to their own benefits, when it comes to Yeah. their own projection and promotion and progress and development, these so-called terms. And then, what we see today is, Khadija, in terms of animal cruelty, we have these, Mhm. makeup brands, we have these fashion brands, Yeah. these clothing and textile brands, who put animals in the labs for the testing of their products, and so this is one thing. And then we have this factory farming, where we have, animals are, like chickens or Mhm. cows, and other species Yeah. which are put into these confined spaces, and they are used and they are given such food, and um, uh, Mhm.
injections and all, so that factory farming could be increased and maximized, the productivity Yeah. could be maximized and profit could be gained by producing large quantities of meat and dairy and eggs. Hmm. So Yeah, this is yeah. also one form of animal cruelty. And then we see abuse in general. For example, in Pakistan, you see, I mean, Mm-hmm. uh, unfortunately, the worst form of abuse Yeah, exactly, uh, yeah. that you could see is uh, abuse against dogs and donkeys in particular. Hmm. So Yeah. now the part is that why do humans do that? So again, as I said earlier, Khadija, the notion of superiority is in play actually, because when you see that Mm-hmm. when you assume that you have a position of authority and you are not accountable to anyone and you are not answerable to anyone, then obviously you exhibit an attitude of uh, you know who cares, and an Yeah. attitude of Mm-hmm. this cruelty and this so shallowness actually. So I believe that there has to be some accountability, but it cannot be just, I mean, we can talk about it at length, but without legal action and without Mm-hmm. Yeah. making laws against animal abuse, we cannot just make humans Mm-hmm. behave properly towards animals. It's not going to happen because obviously there are multiple factors at play. Like I said, there is money at play. There is, and also you see, Khadija, we people unfortunately are breed conscious. So if we Yeah. see a street dog or a cat, Yeah. we assume that maybe it's not a creature worth living. So what we do is, you know better. So Hmm. pelting stones at dogs and poor donkeys and cats, it's a normal routine thing that you'll find people doing. Yeah, and and the and, the and, acid and attack thing, just for fun. yeah, yeah, And yeah, oh and God. another point, Khala, I would, a question I would like to raise is, Mhm. I was going somewhere yesterday, and I was in my car. I just, I was looking outside the car, on the road, and I noticed that there Mhm. were a lot of hospitals, for humans and for people, but there Mhm. were like a very little vet clinics for the animals, and Mhm. those that are there, they're not like really, you know, they don't have the quality and stuff. They're just, for, Mhm. they don't really um possess those things, and they don't Mhm. facilitate the animals in such a way, and even the doctors are not really qualified, and even if they are, they're, in their scarce. They're not Mhm. in the way they should be in, Yeah, like in yeah, the I agree. countries, like in the US, England, and Japan, where they Yeah, do yeah. care for the animals. So why is it's the reason कि पाकिस्तान में उतना मतलब vet shops नहीं है, clinics नहीं है Mhm. उनके लिए, they don't have the proper treatment. What's the reason behind that? ओके, सो इंटरेस्टिंगली खदीजा, आपको यहाँ पर वेट क्लिनिक्स तो शायद बहुत थोड़े मिले, you'll फाइंड जैसे आपने कहा कि स्कार्स हैं, लेकिन जी आपको पेट मार्केट्स और एनिमल मार्केट्स जो है वो बड़ी अबंडेंस में मिलेंगी. टेलिंगटन हम्म मार्केट पाकिस्तान के, ये लाहौर के अंदर है, इसी तरह जी से जी पिंडी में, ऑल अक्रॉस पाकिस्तान यूल फाइंड पेट मार्केट्स. इवन OLX के ऊपर जो है वो जानवरों को बेचा जाता है. बिल्लियां जो है वो लोग चोरी करते हैं किसी के हम्म घर से, दे जस्ट पुट देम ऑन OLX फॉर सेल. आप इमेजिन करें कि एक जानवर जो है, I mean, obviously scientific research has shown, and it is a proven fact that animals are sentient creatures, which means that they have emotions, they have sentiments, they can feel pain, they can they can feel hurt. आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि just steal someone's pet and just put it on OLX and for some petty money. So the हम्म point here is कि खदीजा, वो जो एक इसमें ना कल्चरल एटीट्यूड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. कि अभी आपने डेवलप वर्ल्ड की बात की, US, UK एंड जापान एटसेट्रा. सो उस देखिए, उसकी वजह ये है कि वहां पर मैंने जैसे आपसे कहा कि एक तो वही बात है कि आपका नॉलेज इतना डेवलप कर गया है, आपकी जी वहां जी पर वेलफेयर स्टेट्स हैं. और जाहिर सी बात है कि वेलफेयर स्टेट जो है उसका मैकेनिज्म ऐसा है कि वो इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी एंड राइट्स ऑफ एवरीवन. ठीक है ना?
तो जब वो सारा कुछ वहां हो गया तो हम तो बिल्कुल अभी हमारा मॉडल और उनका मॉडल जो है वो तो बिल्कुल ही एक समझ लेना कि बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, राइट? सो Yes, yes. Mm-hmm. यू देयर खदीजा? Yes, Khala, I'm here. हाँ, ओके ओके। सो बात ये है कि वो जो आप कह रहे हैं कि आपको वहां पर जो है वो इस तरह से ये क्रूअल्टी वगैरह इस तरह नजर नहीं आती, और ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो एक लैक ऑफ एम्पैथी एग्जिस्ट करता है, उसकी बड़ी वजह ये है कि देखें, एक तो जो पोवर्टी का यहाँ पर लेवल है उसने लोगों को सॉर्ट ऑफ इनसेंसिटिव कर दिया है, कि जब इंसान देखते हैं कि हमारी अपनी नीड्स नहीं पूरी हो रही तो फिर उनको ये लगता है कि जानवर तो बड़ा नीचे वाला एक लेवल है ना उनका। तो अगेन एज आई रिपीट अगेन एंड अगेन, कि आप ये देखते हो कि ये जो नोशन है ना सुपीरियोरिटी का, यानी आप लोगों को ये देखोगे जी कि वो जी। कहेंगे कि इतने इंसान जो है वो भूखे सोते हैं तो अब जानवरों हम्म। की कौन परवाह करे। आई बिल्कुल। ऑलवेज टेल देम दैट इट इज नॉट अ जस्टिफिकेशन, इट्स नॉट इवन अ कंपैरिजन टू ड्रॉ। आई मीन, आइडियली तो किसी इंसान को भी भूखा नहीं सोना चाहिए, मगर ये कहना कि एक इंसान भूखा सो रहा है तो अगर जानवर भी सो जाए, नो 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 नो, ये तो बात ही नहीं ना हो सकती। आपको तो मतलब ये तो सबकी एक एफर्ट ऐसी म्यूचुअल होनी चाहिए, कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए कि जिसमें हम्म। आप इंश्योर करें कि सोसाइटी में हर लिविंग बीइंग जो है उसको उसका राइट मिल रहा है। सो वही बात है कि फिर लेजिस्लेशन आ जाती है, रूल्स आ जाते हैं, लीगल बॉडीज जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, आपको डेवलप वर्ल्ड में वो नजर आती हैं। एनिमल अब्यूज जो है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में आप बहुत रेयर जो है वो ऐसा कोई जो है वो देखेंगे कि जिसमें किसी शख्स को सजा मिली हो इस बात पर कि उसने किसी एनिमल को अब्यूज किया, क्योंकि इसको हम इसको हम कुछ समझते ही नहीं है, हमारे लिए इट्स जस्ट अ नॉर्मल रूटीन थिंग। So that's हम्म। actually goes to the societal attitude actually. Yeah. So, okay. So, okay, Khala, can you please name some organizations that are involved in animal protection and what their Hmm. mission is? Yeah, so globally, agar hum dekhe Khadija, we see this wonderful organization, for Paws, and then we have PETA, People for the Ethical Treatment of Mm-hmm. Animals, और ग्लोबल लेवल पर इसी तरह से ग्रीन पीस इज ऑल्सो अनदर वन। और अभी फोर पॉज के बारे में तो जाहिर है हमने काफी देखा कि जी उन्होंने जी। एक्टिवली जो रिगार्डिंग नूर जहां जो है वो उन्होंने जो द पुअर एलिफेंट हु जस्ट died in a miserable condition, तो Yeah. उसके लिए उन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था। इसी तरह से कावान द लोनसम एलिफेंट जी जी जी। that was fortunate enough to be transported and relocated to Cambodia, a sanctuary in Cambodia actually, तो वहां पर मतलब उसमें भी आप ये देखो कि जो है वो बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था। इसी तरह से पीटा जो है वो बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। पीटा को अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत जी। ज्यादा जो है वो हम्म। हाईलाइट किए हुए हैं इन जो जो बिल्कुल। अनफेयर या। ट्रीटमेंट है, अनएथिकल ट्रीटमेंट है एनिमल्स से हम्म। रिलेटेड। और साथ ही साथ जो जो चीज मैं आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर इज द फैक्ट दैट दे हैव दिस होल लिस्ट ऑफ मेकअप ब्रांड्स एक्चुअली, जो कि अभी भी एनिमल टेस्टिंग हम्म। करते हैं, और यूल फाइंड बिग नेम्स एक्चुअली, जो आपको बड़ा लगता है कि वो यानी बड़ी हम्म। एथिकल वो उनकी ट्रीटमेंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं हमेशा ये जी कहती हूँ कि जी। अगर अगर हमने अपना कोई रोल प्ले करना है तो हम ये कर सकते हैं कि इफ यू हैव टू बाय मेकअप तो एटलीस्ट आप पीटा की वेबसाइट पर जाकर जरा चेक कर लीजिए कि विच प्रोडक्ट हम्म। इज ऑन द लिस्ट जो स्टिल प्रमोट करता है एनिमल क्रूल्टी को, एनिमल जी टेस्टिंग जी। को। और बिल्कुल मैं इस तो वक्त उनका ये यही पढ़ी थी जो उनका वो जी जी। सब हेडिंग है, हाउ एनिमल्स आर यूज्ड फॉर क्लोथिंग, और किस तरह ओ उन्हें या। मिसट्रीट किया जाता है फैशन इंडस्ट्री के लिए। और खाला उसमें उन्होंने पिक्चर्स दी हुई है वो आई ओ मीन देखी यस। भी नहीं जाती, एंड हम्म। दैट्स द रीजन हम्म। मैं मतलब तस्वीरों को हमेशा हम्म। मतलब यस स्किप कर यस। देती हूँ मैं। ब्लड हाँ और हाँ। जिस हाल में उनकी वो जो शीप है उनकी स्किन उतारी जा रही है, और जो चिकन जो है, यस यस। चिकन जो डक्स उनके साथ जो सलूक हो रहा सब है, आई जस्ट यस कैंट यस। सी दिस। और इंसान हम्म। किस तरह मतलब कर सकते हैं ये। और जो आप अब और जो केरला में हुआ था 2020 में एलिफेंट के साथ फायर क्रैकर्स वाला, यस। जस्ट फॉर फन, मतलब किसी की लाइफ है, मतलब ये नहीं है कि हम्म। जस्ट बिकॉज दे कैंट स्पीक, जस्ट बिकॉज दे आर हम्म। नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू आर, ऑल्दो उनके भी काफी इंस्टिंक्ट्स होती है और उतने ही वो डेफिनेटली। जहीन है, लेकिन बिल्कुल मतलब बिल्कुल। इसका वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक हमारा फर्ज है एज ह्यूमन बीइंग्स, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, के हम
कोई ख्याल रखें उनका, उनके लिए कोई शेल्टर जिस तरह करें, जिस तरह आजकल गर्मी है और उनके मतलब बर्ड्स हम बिल्कुल देखते हैं बाहर, ज्यादा नहीं हम कर सकते, तो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बर्ड्स को देखें, एनिमल्स, कैट्स एंड डॉग्स हैं, ऑन द स्ट्रीट, उनके लिए हम कोई पानी रख दें, कोई खाना रख दें, इससे बिल्कुल क्या बिल्कुल। चला जाएगा हमारा, थोड़ा सा अगर हम कर लें। यू सो राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली खदीजा, बिल्कुल। अब देखो लोकल लेवल पर एसीएफ और टॉर्ड्स वेलफेयर, इसी तरह से जेएफके नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है लाहौर में जो काम कर रही है। आई मीन देयर यू नो डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एसीएफ, आयशा चंद्रीकर फाउंडेशन जो है कराची में। तो अ, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन वही बात है खदीजा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो तो सबकी हम्म। जिम्मेदारी नहीं ले सकती ना। जी आई जी। मीन इसको तो एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए ना। जैसे अभी आपने कहा कि इसमें क्या चला जाता है कि अगर आप अपने घर के बाहर या अपने रूफ टॉप पर जो है वो जी एक जी। यू नो एक पॉट रख दें पानी का, हम्म। और मतलब उसमें कुछ खाना वाना रख दें आप। तो दिस इज द लीस्ट वी कुड डू। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको कोई जानवर नजर आता है, हु हैज पास्ड अवे, कोई मतलब इंजर्ड एनिमल है और वो मतलब फौत हो गया है, तो आप उसको बजाय इसके कि आप उसके ऊपर से अपनी गाड़ी गुजारते हैं, एटलीस्ट आई मीन आप इतना तो कर सकते हैं कि उसको रोड से एक तरफ कर दें। आप उसको बेरी अगर नहीं कर सकते, इफ यू थिंक योर टाइम इज दैट जी जी। प्रेशियस एंड यू कैन नॉट इवन स्पेयर अ मोमेंट, तो एटलीस्ट डू हैव द सेंसिबिलिटी एंड हैव द ह्यूमैनिटी कि आप उसको जी एटलीस्ट जी। एक तरफ कर दें। वरना आप देखते होंगे कि हमारी रोड्स के ऊपर जो है वो कोई बर्ड या जैसे मुर्गियां बेचारी जो है जी जी। वो अगर गिर जाती हैं, वो जब उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं वो गिर जाती हैं, या कोई बिल्ली या डॉग जो है वो आ गया है किसी गाड़ी की उसमें जद में, तो उसके ऊपर से आप गुजार देते हैं। हाउ कैन यू इवन डू दैट? लेकिन अगेन वही बात है ना खदीजा कि हम लोगों ने अपनी लाइफ्स को इतना फास्ट पेस्ड बना लिया और हमें लगता है जी कि ये छोटे मोटे आई मीन दे डोंट मैटर, क्योंकि अगर ये हादसे होते हैं तो मतलब ठीक है, अब इस पे जी। एक एक चीज को तो नहीं हम बचा सकते। बिल्कुल एक्चुअली नेचुरल है, ये तो दिस होना इज ही है, हम क्यों रोके, मतलब ये तो आज इस यस बिल्ली ने मरना है, आज इस जानवर ने मरना है, तो हम रोक तो नहीं सकते ना, अल्लाह ने हम्म उन्हें ऐसे ही बनाया है, मतलब उनका, उनको कोई दर्द नहीं बिल्कुल होता, उनको यस फील नहीं होता, तो व्हाई नॉट लेट हम्म देम बी। हम्म ट्रू दैट ट्रू। या सो हाला, अगला सवाल मेरा है कि हाउ कैन इलिटरेसी हिंडर एफर्ट्स फॉर एनिमल प्रोटेक्शन। वेल खदीजा, आपको इलिटरेसी तो जितनी भी सोशल इवल्स हैं उनके पीछे इलिटरेसी नजर आती है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि इलिटरेसी जो है उसके साथ साथ एक बड़ी बात ये है कि जो हमारे जनरल कल्चरल एटीट्यूड्स होते हैं ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि अब आप देखो कि देर आर यू विल फाइंड पीपल हु आर हाईली एजुकेटेड बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू हम्म। द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, तो यू विल फाइंड देम कि भाई मतलब क्या है यार, ठीक हो गया, मतलब गाड़ी लग गई, जी। हिट हो गया, क्या हो गया वो। हम्म। या फिर आप उनको देखोगे कि वो जैसे अभी बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनसे यू 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 एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम देम, और वो ऑयल आप अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी जी। लॉन्जेविटी के लिए इंसान जो वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और आप देखोगे कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो बड़े आराम से जो वो उस सारे प्रोसेस को जो है वो समझते हैं कि इट्स तो जस्टिफाइड। यही तो हाला सबसे बड़ा अलमिया है कि पढ़े लिखे लोग जो है, जिनके पास रिसोर्सेज, यस जिनके पास तालीम है, वो भी जब ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, फिर तो दुख यस होता है आपको। एब्सोल्युटली खदीजा, इट ब्रेक्स योर हार्ट, ऑब्वियसली इट डज। um, लेकिन बात वही है कि इलिटरेसी तो बिल्कुल आपने जैसे कहा कि वो एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है हम्म। जो हम ये अब्यूज देखते हैं, ये जो क्रुएल्टी इतनी प्रेवलेंट हमें नजर आती है। तो डेफिनेटली इसको खत्म करने के लिए जो है, जैसे मैंने कहा कि हमें एजुकेशन से स्टार्ट करना होगा, और हमें अपने क्लासरूम्स को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि उसमें, अब जी जी। मैं मेरा हमेशा प्रपोजल ये होता है कि आप अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ये जो रेस्क्यू सेंटर्स होते हैं, एनिमल हम्म। रेस्क्यू सेंटर होते हैं, आप वहां पर उनकी मैंडेटरी इंटर्नशिप्स रखें। आप उनके लिए, ताकि जी अगर एक जी। स्टूडेंट जाकर उनके साथ टाइम स्पेंड करता है तो उसको ताकि पता लगे कि जानवर जो हैं, आई मीन दे आर सेंटिनेंट क्रीचर्स, और उनके साथ जो है वो आपको कैसा सलूक करना चाहिए। एंड इट ऑल्सो इट रिलीव्स योर स्ट्रेस। जी जी। अब आप ये हम्म। देखें, ये कितनी जबरदस्त बात है कि हमारे यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप एनिमल्स के साथ जाएं और आप उनके साथ प्ले करें, आप उनके साथ खेलें, कुछ वक्त गुजारें। हमने बिल्कुल नहीं। हमने या तो जानवरों को कंज्यूम करना है, या तो हमने गाय बकरे का गोश्त खा जाना है, या हमने मुर्गी से उसके अंडे ले लेने हैं, या हमने भैंस से उसका हम्म। दूध ले लेना है। जी। ऑल वी सी एन एनिमल इज इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी।
तो हम ये नहीं देखते कि वो वही बात है कि वो एक कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं उसकी भी, वो एक इंटेलिजेंस रखता है। तो आप उसके लिए आप कभी ट्रीट इवन ट्रीट अच्छा करके देखिए जरा, स्ट्रीट डॉग को भी अगर आप, तो वो आपको देख के दुम हिलाएगा, वो आपके साथ हम्म। मोहब्बत से आपकी तरफ या। भाग कर आएगा। तो मतलब फिर वो आपके साथ जितना फेथफुल हो जाएगा, आई मीन जस्ट इमेजिन कि इतना सा कंपैशन और इतना सा लव जो है वो इट कैन ट्रांसफॉर्म दैट एनिमल एंड इट कैन इवन ट्रांसफॉर्म यू। और आपको पता है कि ये भी एक प्रूवन रिसर्च है कि हमारे अंदर जो फील गुड या हैप्पीनेस का जो एक वो होता है ना, उसको हम कहते हैं हार्मोन जो है, सेरोटोनिन। तो हम्म। बेसिकली कैट्स डॉग्स जो हैं दे एक्चुअली हेल्प योर बॉडी रिलीज सेरोटोनिन इन यू, और इससे आपका मूड है वो बेहतर होता है, एलिविएट होता है, बेटरमेंट होती है उसके अंदर। तो ये तो आपके लिए एंटायर डिप्रेसेंट है ना, नेचुरल एंटायर हम्म। डिप्रेसेंट है। तो लेकिन खाला, हम आप इंसानी उनको जो है बच्चों को वो, बहुत प्यार जी। देते हैं, उनको हम मतलब ट्रीट देम विद या अफेक्शन, या और या बहुत कहते हैं क्यूट है, या इतना मतलब प्यारा है। हम्म तो जिस तरह पपीज होते हैं, जिस तरह किटन्स होते हैं, तो उनको क्यों नहीं उतना हम हम्म कर सकते? मतलब क्यूट वो भी कम नहीं होते? खदीजा, वो बात ये कि देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा कि हम हर चीज को एक ट्रांजैक्शन के तौर पर, एक यूटिलिटी के तौर पे देखते हैं। तो ह्यूमंस को मैंने जैसे आपसे कहा कि एक तो उनको सुपीरियर हमने समझा हुआ है। फिर दूसरा ये भी होता है कि ह्यूमन किड्स जो हैं उनसे हमें इन द लॉन्ग रन आई मीन कुछ लेना होता है, लाइक अच्छा। ऑब्वियसली जी जी। आपको पता है ना कि हमारी ये सोच होती है कि हम बूढ़े हो हम्म। जाएंगे तो वो हमारा काम आएगा। या हमारे, अब देखो ना, आप बिल्ली से तो नहीं कह सकते कि मुझे चाय बना के जी। रखो। बिल्कुल। राइट। तो वही बात है कि हम दैट देयर इज दिस इनहेरेंट सेल्फिशनेस इन ह्यूमन बीइंग्स, यू नो, टू बी ऑनेस्ट, हम लोग हर चीज को एक ट्रांजैक्शनल वैल्यू के तौर पे देखते हैं, यूटिलिटी के तौर पे देखते हैं कि ये चीज में कितना फायदा। अब देखोगे, आप बिल्ली, कुत्ता या कुछ भी इस तरह का जानवर है, तो वो आप पे डिपेंडेंट है ना बेसिकली। जी जी। आप उसको फीड कराएंगे, आप उसको खाना देंगे, आप उसकी टेक केयर करेंगे, वो तो नहीं आपकी करेगा। ऑल हम्म। दे कैन गिव यू इज अनकंडीशनल लव। तो हमारा मसला है कि हमने हर चीज के साथ कंडीशंस रखी हुई है ना। तो हम जी जी। इंसानी बच्चों के साथ भी वो जो एक वो होता है ना, आप आई मीन आई 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 एम वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि अगर कोई इसको कहे कि नहीं नहीं, इंसानों के साथ हमारा रवैया इसलिए नहीं अच्छा होता कि हमें हम्म। उनसे फायदा होता है, बिल्कुल इसलिए होता है जी। क्योंकि हमें उनसे फायदा होता है, हमें उनसे मतलब चाहिए होता है। सो आई मीन दिस इज हाउ वी आर, अनफॉर्चुनेटली। तो ये वो रीजन है कि जिसकी वजह से हम जो है वो हम्म। उस तरह से जानवरों को ओन नहीं करते। बिल्कुल, इसके अलावा आई थिंक कोई रीजन लॉजिकल है भी नहीं जो वो हमें मतलब दे सके अपने डिफेंस में, जो लोग या कहते हैं ना कि या ऐसा ट्रू, नहीं है। या तो दैट्स राइट, दैट्स या, करेक्ट। आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग खाला। आई मीन नॉट हम्म। एवरीथिंग ऑफ कोर्स, लेकिन जो हमने डिस्कस करना था आज के पॉडकास्ट में, एंड you've या been या able to या tell us everything and give us your views on how animal cruelty uh, is something really unethical, और किस तरह उसको हम हम्म। सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करने में हेल्प कर सकते हैं, एनिमल इंटरस्पीसीज जस्टिस को, और एनिमल यस, उन एनिमल्स का ह्यूमन ट्रीटमेंट को। और दूसरा आपने वो भी बिल्कुल। खाला जो कहा कि आई थिंक एजुकेशन जो है वो किस तरह इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती है। और हम खाला, लेकिन um, जिस तरह वो इंडिजिनस लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स तो वो हम्म। भी हैं, तो उनके साथ यस। उनके साथ इस तरह करने की रीजन क्या है? वो शायद उतने हम्म। शायद उतने हेल्प नहीं कर सकते हमें डेवलपमेंट के लिए, वो जॉब्स नहीं कर सकते और पे बैक नहीं कर सकते या सोसाइटी को, और वरना क्या रीजन है? आई थिंक खदीजा, वी शुड हैव अ सेपरेट पॉडकास्ट ऑन दैट, बिकॉज ये बहुत एक अलग और बहुत ही हाँ हाँ। इंटरेस्टिंग और जी बड़ा जी। डीप एक जाहिर है कि टॉपिक है जिसके ऊपर एट लेंथ वी विल बी डिस्कसिंग, अगर आप बिल्कुल। फ्यूचर में इस जी पे जी। रखती हैं, बिकॉज ये एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है कि इंडिजिनस कम्युनिटीज जो हैं उनके हम्म। साथ क्यों अनफेयर ट्रीटमेंट रहता है इंसानों का। अब उसमें वही बात है कि एक बड़ी वजह तो यही है कि वो लोग चूंकि अपनी नेचर और अपने इकोसिस्टम के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि जैसे अब अगर आप यू नो रेड इंडियंस के बारे में भी पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि जब यूरोपियंस जो हैं दे हम्म। ट्रैवल्ड एंड जब कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। हाँ, जी तो जी। हमने उसमें भी यही था ना कि जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी थी, यानी जो इंडिजिनस कम्युनिटी थी, उनके बारे में यही उनकी एक परसेप्शन थी कि दे आर नॉट सिविलाइज्ड इनफ।
और ये लोग जो अच्छा। है वो अभी भी उस तरह से जो है वो जैसे अभी भी आप देखो ना हम बहुत सारे ट्राइब्स जी आपको जी। अफ्रीकन ट्राइब्स और इस तरह हम्म। के रैंडम इंडोनेशियन ट्राइब्स आर स्टिल जी। देयर इवन देयर आर इंडियन ट्राइब्स जो आपको अभी भी हम्म। मिलेंगे आप अगर अरुंधति रॉय की अगर आप उनकी किताब पढ़े जी जी। वॉकिंग विद कॉमरेड्स तो उसमें ओके। वो एक बड़ा एक उनकी बड़ी जबरदस्त वो इलेबोरेट करती हैं कि किस तरह से